Good afternoon, everyone. My name is Ravikant Tiwari, and I'm going to be the moderator of this session today. Quick context. The government of India has a target in next 5 years for exports to reach 1 trillion, merchandising export 1 trillion, and 1 trillion for service export. Therefore, our leadership has given us the target to double Madhya Pradesh exports in next 5 years. We are going to discuss how we can achieve it today. And I now invite our session chair, Mr. Raghavendra Singh, Principal Secretary, Department of Industrial Policy and Investment Promotion, Government of Madhya Pradesh, to set the official context and objectives of today's consultation. Sir, over to you. So good afternoon. Welcome to this session. I know it is really very difficult to do a session after having lunch, और वो भी गाजर के हलवे के बाद तो और भी मुश्किल है मतलब वो. और मैं कोशिश करता हूँ कि कंटेक्स्ट आपके हिसाब से कुछ मैं सेट करूँ. तो मध्य प्रदेश में पिछले कई सालों के अगर आंकड़ों को देखें तो जो मैक्सिमम एक्सपोर्ट विच वी कुड डू वाज अराउंड 66,000 करोड़, 66,000 करोड़ के आसपास का एक्सपोर्ट हम लोग कर पा रहे हैं. और हमारी रैंकिंग मेरे ख्याल से सुबह शाह साहब भी बैठे हैं, तो हमारी रैंकिंग 15th पोजीशन पे हुआ करती थी. वो 15th से 11th पे हमारी रैंकिंग पिछले समय में आई है. इशू ये है कि जो अगर आप उसकी ट्रेजेक्टरी को देखेंगे, मतलब उसकी जो ग्रोथ रेट को देखेंगे, तो एक अगर CAGR की बात हम करते हैं कि एनुअल ग्रोथ रेट कैसी पा रही है, तो ऑलमोस्ट लगभग ऐसा लग रहा है कि जैसे हम सैडल पे आ गए. मतलब वो हॉरिजॉन्टल होते जा रहे हैं. मतलब द कर्व हैज़ टू बी लिटिल बिट स्लांटेड, उसके कुछ एंगल्स होने चाहिए, पर वो इसके पहले वाले साल में 65,000 करोड़ के आसपास था, अब 66,000 करोड़ के आसपास है. वो भी अगर नेट प्रेजेंट वैल्यू के टर्म्स में देखें और फिर दूसरे टर्म्स में देखें. तो जो कंटेक्स्ट मैं बताना चाह रहा हूँ कि मध्य प्रदेश में बड़ा स्टेट है, बहुत सारी संभावनाएं हैं, बहुत सारे सेक्टर्स हैं. उन सबको देखते हुए मध्य प्रदेश में एक्सपोर्ट में भी बहुत सारी गुंजाइश है. और दूसरा जो इसके बारे में सब्जेक्ट आता है कि कंट्री के टोटल एक्सपोर्ट में मध्य प्रदेश का कंट्रीब्यूशन 2% के भी नीचे, 1.98% के आसपास, 2% से भी नीचे. तो इट्स अ वेरी प्रॉब्लमेटिक थिंग. आप उसको दूसरे आंकड़ों के हिसाब से देखना चाहें तो मध्य प्रदेश कंट्री की टोटल GDP का 4.4 से 4.6%, करीब 4.5% कंट्री के GDP को हम रिप्रेजेंट करते हैं. हमारी जियोग्राफिकल एरिया के बारे में आपने देख ही लिया. हमारी पॉपुलेशन के हिसाब से आप मध्य प्रदेश को देख ही रहे हैं कि वो पॉपुलेशन के हिसाब से भी 4-5-6% के आसपास हैं. तो इन सबको देखते हुए जो मध्य प्रदेश का कंट्रीब्यूशन ऑन एन एवरेज भी पूरी कंट्री के एक्सपोर्ट में होना चाहिए, वो हमें लग रहा है कि अभी हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत पड़ेगी. सो दैट इज़ वन थिंग आई जस्ट वांटेड टू से. दूसरा ये है कि अब इसको दूर करने के हिसाब से हमारी एक्सपोर्ट प्रमोशन की स्ट्रेटजी क्या होगी, उन विषयों पे और भी हमारे एक्सपर्ट बताएंगे. पर हम लोगों ने पहली बार मध्य प्रदेश में एक्सपोर्ट प्रमोशन की पॉलिसी हम लोग ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब से इनाग्रेट करा के 24 फरवरी को हम लोग लेके आए. और इसमें हम लोगों ने कोशिश की कि हम एक्सपोर्ट में सर्टिफिकेशन पर रिलेटेड कुछ इश्यूज़ हों, एक्सपोर्ट में फाइनेंसिंग पर रिलेटेड इश्यूज़ हों, एक्सपोर्ट में फ्रेट रिलेटेड इश्यूज़ हों. तो उन सबको हम लोगों ने कोशिश की है जितना हमारी अपनी अंडरस्टैंडिंग थी. और बल्कि यू विल बी अमेज्ड टू नो कि वो इंक्रीमेंटल एक्सपोर्ट के ऊपर सपोर्ट करने का सिस्टम हो,
कि आपका इस साल 100 करोड़ का एक्सपोर्ट है, अगले साल 10 करोड़ और आपने बढ़ा के 110 करोड़ का किया, तो इंक्रीमेंटल एक्सपोर्ट के परसेंटेज के रूप में आपको सपोर्ट देने का भी एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी में। तो वी हैव ट्राइड आवर लेवल बेस्ट, और जो कुछ भी हमें फीडबैक सबसे मिला है उसको हम लोगों ने कोशिश करने को। जो एक तीसरी बात कहें कि मैं अपनी बात ख़त्म करना चाहूँ कि सबसे इंटरेस्टिंग और चिंता वाली जो बात है या जिसके ऊपर वर्क करने की ज़रूरत है कि बहुत सारी चीज़ें मध्य प्रदेश से एक्सपोर्ट हो रही होंगी, पर उनका एक तो डेटा या रिकॉर्ड हमारे पास नहीं है, वो कहीं और किसी और स्टेट के खाते में काउंट हो जाती होंगी। पर मैं उससे भी वरीड नहीं हूँ। अगर हमारे यहाँ के प्रदेश का हमारा किसान या प्रदेश का हमारा व्यवसायी महाराष्ट्र के थ्रू महाराष्ट्र के डेटा में इंक्लूड होके या गुजरात के डेटा में इंक्लूड होके एक्सपोर्ट कर रहा है और उसको प्रॉफिट मिल रहा है, तो आई एम नॉट वरीड। मेरी वरी दूसरी है। I have spoken to big farmers in मध्य प्रदेश डायरेक्टली, मैंने उनसे डायरेक्टली बात की। वरी मेरी ये है कि फूड प्रोसेसिंग में, एग्रीकल्चर में या दूसरे सारे सेक्टर्स में जिसमें मध्य प्रदेश कैन बी न्यूमरो यूनो इन एंटायर कंट्री, लेकिन पता चला कि वहाँ पे बड़े बड़े हमारे जो एग्रीकल्चरिस्ट हैं उनको पता ही नहीं कि एक्सपोर्ट वगैरह कैसे होना है, क्या होना है। तो मेरी एक मतलब सभी से गुजारिश ये होगी कि हमारे छोटे उद्योगपति हों, फूड प्रोसेसिंग के किसान हों या दूसरे हॉर्टिकल्चरिस्ट या फ्लोरिकल्चरिस्ट हों, इन सबको सिखाएगा कौन कि वो क्या बोलते हैं कि एक्सपोर्ट कैसे करना है। और तो इसके ऊपर हमें बहुत तगड़ी जद्दोजहद करने की ज़रूरत होगी। हम कोई एक्सपोर्ट हेल्पलाइन क्रिएट करना चाहें या डिस्ट्रिक्ट में उनकी हैंड होल्डिंग करना चाहें, क्योंकि ये बड़ा बहुत मेजर इशू है। बहुत बड़े बड़े एग्रीकल्चरिस्ट उनको खुद ही पता नहीं कि एक्सपोर्ट करना कैसे, जिनके पास मुझे पता है कि बहुत सारा तो उनको कोई बाकी सस्टेनेंस के लिए उनका कोई खेती नहीं कर रहे हैं, उनका खेती केवल कमर्शियल लेवल पे है। तो मैं बाकी विषय आप लोग डिस्कस करेंगे, इसमें गवर्नमेंट की क्या भूमिका हो सकती है, आप लोगों का सपोर्ट कैसे मिल सकता है। Over to you, Ravi. Thank you so much, sir. Sir, you have laid out the landscape, and we can begin our conversation for today. But before that, I would like to share with you all that we have Mr. Chandramouli Shukla, who is the Managing Director, MP Industrial Development Corporation, who also happens to be our Export Commissioner of State of Madhya Pradesh. So if I may request to you to share about our initiative and your vision, and we can dive into a conversation after your address. Thank you. Thank you, Ravi. Let me accept this that before the policy came in, I was not knowing that I am the Export Commissioner of Madhya Pradesh. Such was the MD of Madhya Pradesh Industrial Development Corporation, by the virtue of its post, is Commissioner Exports for Government of Madhya Pradesh. I never knew this until last year we thought of coming up with export promotion policy. I know that's why such kind of stakeholder consultations are much more important than general kind of efforts we do in doing the exports or promoting the exports from Madhya Pradesh. While we were in the process of making the policy, there were 2-3 things we were thinking. One, number of exporters should increase. So that's why if you look at the policy, you'll find that there is a lot of emphasis on increasing the number of exporters from Madhya Pradesh. The second was increasing the volume of exports. So even the industries which are already exporting, if they can increase the volume in terms of the tonnage and volume in terms of money, if you can do that, then probably Madhya Pradesh can come little up in terms of exporting something from Madhya Pradesh. And third is correcting our data. So I know the official data which we have today is Madhya Pradesh exporting around 66,000 crores of value. With all the estimates, even if you normally talk to most of the exporters from Madhya Pradesh, I can count it is more than 1 lakh crore.
only the, if you look at all the pharma exports which is happening from Madhya Pradesh, that's more than 1 lakh crores. I was talking to somebody in my office, and just I asked, what's the kind of export you're doing? Something like 25,000 crore ka karte hain sab. One company. And they were not the biggest ones. So another thing which we thought of, that after this consultative meeting, we should also devise a mechanism to get the real figures. If we do it in the year 25-26, probably once we have committed ourselves that our exports will increase to double by 2030, probably we can do it this year by correcting our data. So data correction is also very important. Given all the perspectives, all the thought process, all the experts we hired in and the consultative meetings we did while doing the policy, you'll see at least there are 10 heads under which we incentivize the exports. Not only the exports, but the exporters. Not only the exporters, but the exporters who increase the volume year by year. So we generally think there is enough in the package which Madhya Pradesh this year has launched, but that's not enough. After such kind of consultative meetings, we can always improve upon our policy. We can always improve policies, not necessarily after 5 years, but on the year-to-year basis, but we should have enough reasons for things to do. And probably you being the experts, and after the deliberations today and conclusion which we'll get from this meeting, we'll definitely try to incorporate so that the exports and the number of exporters from the state get increased. Probably we can discuss this further while the discussion is on, but this is the context in which we thought the policy should be done. One, increasing the number of exporters, increasing the volume of exports in terms of money, in terms of tonnage. Thank you. Great. Thank you so much, sir, for your address. And in next 60 minutes, now there are some themes. High level, we have some government officials from Government of India. We would like to hear from them about this National Export Promotion Mission and the budgets which has been allocated, and that the initiatives and the priorities of Government of India. So if I may invite Mr. Rakesh Chandra Sharma, who is the General Manager of India Trade Promotion Organization, to talk at high level about the Government of India's initiative and the initiative of your department for export promotion. Sure, sir. So good afternoon to all of you. So as you said, export promotion mission. So this is something which is being dealt by the ministry itself, Ministry of Commerce. Now ITPO has confined itself to just providing this nice infra to the business community for holding these discussions, meeting, interactions. So right now, as I told earlier, we are having World Mandapam, Bharat Mandapam in New Delhi, and have hosted so many global events, domestic events. And even today we host annually around 100 plus business events there, exhibitions there. So export promotion, since this inception of Export Promotion Council, this work more or less has been taken from the ITPO. So now directly we are not dealing with this subject, so I am sorry to elaborate on this. But I would like to say earlier we used to have around 10 offices outside India, and it directly involved in promoting this export. But later on, this work was taken over from us. And again, some discussion is going on in Government of India to enlarge the scope of ITPO. Some GTPO concept is coming up. So in the coming days, maybe ITPO may be actively involving in it. But as we hold these business exhibitions, and so many companies participate in it, but they do not share this data, how much they earn through this export or so they do not share with us, and even more we also don't ask for them. So more or less our work is limited to just providing this nice infra to the business community.
Great, thank you. So in the folder, you would find one export analysis of Madhya Pradesh. So instead of putting it a presentation, we have shared the document which is prepared by Federation of Indian Export Organization. And we have Mr. Shuvit, who is Additional Director General of Federation of Indian Export Organization. And he also, his past assignment, he was the Executive Director with MP Industrial Development Corporation and was in charge of export promotion. So I would request Mr. Shah to share, that high-level Government of India initiative about the report, the export analysis, and maybe for, where do you see the low-hanging fruits in next, say, 90 days? What 3 big decisions or activities what Government of Madhya Pradesh or MP Industrial Development Corporation need to focus? Over to you, Mr. Shah. Thank you, Mr. Ravi. Sir, thank you, my PS Shri Raghavendra Kumar Singh sir, and I thank you, my MD Shri Chandramouli Shukla sir. सबसे पहले तो अपने ऑनरेबल मुख्यमंत्री साहब को शासन में आए हुए लगभग 2 साल होने को आए हैं और मैं 2 साल की उनकी सक्सेसफुल जर्नी का पार्ट रहा था अभी तक 2-4 महीने पहले तक। तो साहब ने जैसे शासन संभाला था तो उनका पहला ही हमेशा फोकस रहा था ट्रेड और इन्वेस्टमेंट के रिलेशन के, और अपने ऑनरेबल इंडस्ट्री मिनिस्टर भी ऑनरेबल मुख्यमंत्री जी हैं, वो भी एक सौभाग्य है हमारे डिपार्टमेंट का, खास करके इंडस्ट्री और कॉमर्स का। तो उन्होंने आके तुरंत ही पहले ही काम किया था कि ट्रेड इन्वेस्टमेंट कैसे बढ़ाया जाए। तो उन्होंने सबसे पहले इंडिया में रीजनल लेवल की रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव चालू की थी और सक्सेसफुली लगभग सारे रीजन में, फॉर एग्जांपल ग्वालियर हैं, फॉर एग्जांपल जबलपुर वगैरह हैं, सारे रीजन में इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव। तो उसका सबसे पहला हमको इनपुट मिला था, क्योंकि इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव खाली एक इवेंट नहीं होता है, कई सौ यानी मान लीजिए कई सौ अपने बिजनेसमैन को डायरेक्ट मिलने का मौका मिलता है, और जो भी बड़े इन्वेस्टर होते हैं, छोटे इन्वेस्टर होता है, उसका पहला ही काम होता है कि एक्सपोर्ट कैसे बढ़ाया जाए। तो उसके माध्यम से हमने काफ़ी एनालिसिस किया था, काफ़ी चीज़ें की थी। उसके बाद लंबा प्रोसेस के बाद ऑनरेबल मुख्यमंत्री साहब के माध्यम से और माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों के द्वारा एमपी ने अभी तक की सबसे रॉबस्ट एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी घोषित की है। लगभग फरवरी में उसकी घोषणा हुई है। तो मैं सर के नहीं होते भी उनका थैंक यू वेरी मच ज़्यादा बोलना चाहूँगा, मेरे एमडी सर का बोलना चाहूँगा। और अभी तक की जितनी पॉलिसी आई थी, खास करके तो जो थोड़ा लॉ बैकग्राउंड सर लॉ जानते हैं, एक्सपोर्ट कभी भी राज्य सरकार का हिस्सा नहीं रहा था। शेड्यूल 7 में हमेशा वो सेंट्रल गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी रही थी। बट 2019 के बाद जब से ऑनरेबल मोदी साहब ने लाल किले से एक घोषणा की थी 15 अगस्त को कि एक्सपोर्ट को हम कोऑपरेशन विद स्टेट का काम चलाएंगे, उसके बाद सारे स्टेट्स ने एक्सपोर्ट में बड़ा काम करना चालू किया था। और उसके अंदर से अपने माननीय मुख्यमंत्री जी ने वो विजन को साकार करते हुए सबसे रॉबस्ट पॉलिसी की घोषणा की। तो आप जितने महोदय बैठे हैं तो उसकी हाईलाइट मैं बताना चाहूँगा। सबको पता है कि एमपी एक लैंडलॉक स्टेट है, तो सर के माध्यम से और काफ़ी मशक्क़त के बाद, काफ़ी फिनांस अपने डिपार्टमेंट से काफ़ी डिस्कशन के बाद सबसे रॉबस्ट लॉजिस्टिक सपोर्ट हमने जारी किया एक्सपोर्ट पॉलिसी के अंदर। मान लो कि जो बंदा कंटेनर यहाँ से ले जाता है कोई भी पोर्ट में, तो एक सिंपल सपोर्ट्स गवर्नमेंट के तरफ से दिया जाता है। अभी महाराष्ट्र लैंडलॉक स्टेट नहीं है मगर मध्य प्रदेश है। तो मैं आपको कंपैरिजन चार्ट के हिसाब से बताना चाहूँगा, अगर कोई बंदा जबलपुर से एक्सपोर्ट कर रहा है तो वो हमारी पॉलिसी के अंदर आएगा तो वो कम पैसा लगेगा, नहीं कि वो नागपुर से करेगा। दोनों कहने को इंडिया के रेंज में दोनों लैंडलॉक टाइप के हैं। तो ऐसी पॉलिसी बनाई एग्जैक्टली जैसे इंदौर से कोई एक्सपोर्ट करेगा और सिमिलरली वो नासिक से करेगा तो ऑलमोस्ट उसकी कॉस्ट सेम चली जाएगी। और इंदौर रीजन को दोनों फायदा है कि वो मुंद्रा पोर्ट से भी पास है और जेएनपीटी पोर्ट से पास है। तो पहली बार यानी सीधा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जो आप बता रहे हैं, ऐसा बेनिफिट की घोषणा सरकार ने एक्सपोर्ट पॉलिसी के माध्यम से की है। दूसरा, उसमें विजनरी वगैरह जो डॉक्यूमेंट्स हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश ऐसे एग्री प्रोडक्ट वाला स्टेट है और धीरे धीरे एग्री प्रोडक्शन उसका प्रोसेसिंग बढ़ता रहा है। दूसरा, हमारे फार्मा इंडस्ट्री है, दूसरी हमारी अलग अलग इंडस्ट्री है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम छोटे एक्सपोर्टर्स को आता है सर्टिफिकेशंस का। सर्टिफिकेशन में मैं फार्मा एग्री इंडस्ट्री की बात करूँ, यूएसएफडीए हैं, उनको एमआरएल है, हलाल सर्टिफिकेट्स है। तो मैसिव सपोर्ट जारी किया गया है एक्सपोर्ट पॉलिसी के अंदर
कैसे सारे सर्टिफिकेशन क्वालिटी इंप्रूवमेंट्स आपके लिए फ्री रहे, मैक्सिमम गवर्नमेंट सपोर्ट मिले। ये एक्सपोर्ट पॉलिसी के अंदर वो भी विजन जारी किया गया है कि नए एक्सपोर्टर कैसे बना जाए, एक्सपोर्टर कन्क्लेव्स और एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए कौन से प्रोग्राम्स जारी किए जाए। एक्सपोर्ट पॉलिसी जस्ट अभी आई है, तो नेक्स्ट ईयर आपने देखे होगा उसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस मिलेगा। वही एक्सपोर्ट पॉलिसी का एक पार्ट के हिसाब से आज हम यहाँ बैठे हैं, जहाँ आसियान के सारे एम्बेसडर साहब के साथ हमने ट्रेड और एक्सपोर्ट के बारे में डिस्कशन किया है। सर ये हमारा अभी तक की जर्नी 2 साल की पॉलिसी वाइज की बताना चाहूँगा, और ये पहली बार उद्योग विभाग ने माननीय मुख्यमंत्री जी के सौजन्य से हमने इस बार उद्योग वर्ष के रूप में मनाए रहे हैं। और इस बार मेरे ख्याल से मध्य प्रदेश के इतिहास में इंडस्ट्रियल फ्रेंडली हाईएस्ट एवर पॉलिसी का विमोचन हुआ है। तो पहले तो गवर्नमेंट ने अपना विजन क्लियर किया है, दूसरा मिशन करके उसका इम्प्लीमेंटेशन आपको सामने देखने को मिल जाएगा। और इसके साथ में ही मैं बताना चाहूँगा, लगभग इतिहास का हाईएस्ट इन्वेस्टमेंट हमने ये साल लाए हैं ज़मीन पे चालू करने के लेवल में, जिसमें आप भूमि पूजन और लोकार्पण बोल सकते हैं। और जितने भूमि पूजन और लोकार्पण हुए, खास करके लोकार्पण जितने भी हुए हैं उसमें से ज़्यादातर यूनिट एक्सपोर्ट रिलेटेड है। इन द सेंस तो डोमेस्टिक अराउंड 30-40% करेंगे, कोई 50-60% एक्सपोर्ट करेगा, कोई 20-30%, लगभग कोई ऐसा यूनिट नहीं है जो एक्सपोर्ट रिलेटेड ना हो। हमने इस बार हाईएस्ट इन्वेस्टमेंट लाया है, टेक्सटाइल में लाए हैं, मेडिकल डिवाइसेस में लाए हैं, और अलग अलग इंडस्ट्री खास करके इंजीनियरिंग इंडस्ट्री में लाए, बैटरी जैसे रिलेटेड में लाए, ऑटोमोबाइल्स में लाए हैं। सारे इंडस्ट्री अगर हमारा एक्सपोर्ट पॉलिसी का सही फ़ायदा उठाए और सारी चीज़ करे तो उस हिसाब से हमारा 20-30% एक्सपोर्ट बढ़ सकता है। सर ने जो दोनों मेरे ऑनरेबल सर ने, PS सर और MD सर ने बताया कि एक्सपोर्ट का डेटा हमारा कितना लैक्यूना है। सर ने अपना एक फार्मा का एग्जाम्पल शेयर किया, सर उल्टा एग्जाम्पल मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा गुजरात का एक्सपोर्ट, क्योंकि मैं एक्सपोर्ट वहाँ का भी सिमिलरली देखता हूँ। गुजरात का गेहूँ और चावल जो सीरियल्स है उसका एक्सपोर्ट 11,000 करोड़ है, और मुझे पक्का पता है कि गुजरात से कोई एक सिंगल सीरियल की कोई प्रोडक्शन वहाँ होता नहीं और ना से वहाँ से एक्सपोर्ट होता है। वहाँ पे खाली गोडाउन्स है और खाली प्रोसेसिंग यार्ड, और सबसे ज़्यादा प्रोक्योरमेंट गुजरात का जो सीरियल्स का होता है अपने मध्य प्रदेश से होता है, खास करके गेहूं के रिलेशन पे सारी चीज़ें, और जबलपुर अपना चावल वाला बेल्ट है। अगर वो मैं से उसमें 50% भी एक्सपोर्ट अपने वहाँ पे गिनूँ तो अपने एक्सपोर्ट के आंकड़े काफ़ी बेहतरीन है। खाली डेटा कलेक्शन का प्रॉब्लम है, मगर आपके माध्यम से आप कोई अच्छी पॉलिसी और अच्छा विजन लेके आएंगे तो हम इम्प्लीमेंटेशन की जिम्मेदारी उठाएंगे, तो आपको नियर टू करेक्ट डेटा आने की पॉसिबिलिटी आ जाए। हमने सर के मार्गदर्शन और माध्यम से एक्सपोर्ट एनालिसिस आपके सामने पड़ा है, और उसके सामने अगर आप देखें तो इतिहास की सर्वश्रेष्ठ फिगर अपने सामने एक्सपोर्ट की है। इस बार अपना एक्सपोर्ट हाईएस्ट एवर 66,000 करोड़ हुआ है। वो हमारे ऑनरेबल मुख्यमंत्री साहब के लिए, हमारे सारे एडमिनिस्ट्रेशन लोगों के लिए एक गर्व की बात होती है। उसमें शायद आपको जानकारी ना हो, मध्य प्रदेश अपना रीजन में 7 SEZ भी अपना होस्ट करता है। इसमें सबसे हमारा वाइब्रेंट कोई SEZ है तो इंदौर SEZ जाना था, वो खाली एक ही SEZ से 18,000 करोड़ का एक्सपोर्ट है। 59 जितने बेहतरीन वर्ल्ड के सबसे बेहतरीन यूनिट्स वहाँ मौजूद है, तो हमारा वो एक्सपोर्ट का मुकुट माना जाना चाहिए। और फॉर्चुनेटली अपने पास मैसिव IT एक्सपोर्ट के SEZ भी हैं। फॉर एग्जांपल TCS भी है अपने पास, इन्फोसिस भी है, यस टेक्नोलॉजी वगैरह सारी कंपनियां मौजूद है। अगर हमारा ट्रेड बास्केट देखा जाए तो फार्मा है, एग्री प्रोडक्ट्स हैं, अपने सबसे शानदार टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स हैं। टेक्सटाइल में तो सारे लेवल का हम अच्छा एक्सपोर्ट करते हैं। कॉटन का काफ़ी रीजन जैसे तमिलनाडु रीजन है, कॉटन बेस्ड एक्सपोर्ट ही मात्र करता है। हमारा कॉटन बेस्ड तो एक्सपोर्ट करते ही करते हैं, कॉटन यार्न में, कॉटन उगाई में, जो एग्री प्रोडक्ट्स में हम अच्छे स्थान पे रखते हैं। प्लस हम जो सिंथेटिक और फाइबर बेसिस जो टेक्सटाइल है, खास करके FIBC जो थोड़ा बहुत जानते हैं, उसमें भी हम इंडिया में नंबर 1 है। तो मध्य प्रदेश का ऑटोमोबाइल का एक्सपोर्ट है। जनरली ऑटोमोबाइल लोग कार और पैसेंजर्स व्हीकल्स जानते हैं, मगर हम सबसे अच्छे कॉमर्शियल व्हीकल्स में हैं, खास करके बड़े पैसेंजर व्हीकल्स में भी हम अच्छे स्थान पर रखते हैं। ट्रैक्टर्स की अच्छी खासी अपने वहाँ पे प्रोडक्शन प्लस एक्सपोर्ट्स होता है। तो हमारे वहाँ जो हिडन जेम्स है वो हमने अभी पहचाने नहीं है सर, आपके माध्यम से और पहचान के आगे। अगर एक बात और है, उसमें जबलपुर अपना बिल्ट है। पिछले कई टाइम से, लगभग 2-3 साल से 200 से 300 नई एग्री बेस्ड फैक्ट्रीज आई हैं, खास करके बाहर से इन्वेस्टमेंट आके अपना वहाँ बहुत बड़ा है। क्योंकि अपना जो एग्री प्रोडक्ट्स है लेस पेस्टिसाइड वाला होता है, लेस फर्टिलाइजर वाला होता है, तो उसका MRL सर्टिफिकेशन और बाकी सर्टिफिकेशन US FDA मिलना काफ़ी आसान होता है। तो फूड में बड़ी बड़ी इंडस्ट्री आपके माध्यम से सर यहाँ आई है, जैसे भगवती से ले लो, दावत से ले लो, काफ़ी इंडस्ट्रीज अपने वहाँ आई है।
तो फूड बेस की एक अपने वहाँ सबसे बेहतरीन चीज़ बननी है। सर आपके माध्यम से कि इंडिया के सबसे अच्छा पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स आ रहा है बीना में। वो पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स एक खाली एक कुआं होता है, इन द सेंस इट इज सोर्स ऑफ इंडस्ट्री होता है। अगर वो सक्सेसफुल अपने समय में हो ही जाने वाला है तो उसके बाद उसकी रिलेटेड इंडस्ट्री खास करके प्लास्टिक की है, पेट्रोकेमिकल्स की हैं, केमिकल्स और उसके डेरिवेटिव्स है, उसका बड़ी संभावना अपने वहाँ बनती है। सर अपने वहाँ अभी पहली बार इतनी बड़ी स्ट्रेंथ इतिहास में हुई कि लगभग हमारे सारे डिस्ट्रिक्ट 4 लेन रोड से कनेक्टेड है, ऑलमोस्ट सारे डिस्ट्रिक्ट है, और लगभग सारी डिस्ट्रिक्ट पोर्ट से भी इतने कनेक्टेड है। अपने पास इंडिया का सबसे अच्छा रेल नेटवर्क जैसे कि कटनी मौजूद है, रीवा वगैरह मौजूद है। तो आपके माध्यम से ऑनरेबल सीएम साहब ने अपना विजन भी तैयार किया है, उसमें वो रीजन में आईसीडी बनाने की बात की है। अगर आईसीडी बन जाता है तो डेफिनेटली हमारा दो हो जाएगा, अपने एक्सपोर्टर को सस्ता गुड्स जाएगा, दूसरा फायदा ये हो जाएगा कि हमारा जो आईसीडी से गुड्स एक्सपोर्ट होता है वो एमपी के अकाउंट में कन्वर्ट होता है, क्योंकि वो पोर्ट्स में वो रजिस्टर होता है। तो आने वाले समय में मेरे ख्याल से ये बेस बन जाएगा, ये जो आपने 66,000 करोड़ रुपया बताया है, और आने वाले समय में ये बढ़ता ही जाएगा। और अगर इंडिया का टोटल मैप देखें और टोटल एक्सपोर्ट का बास्केट देखें तो एक्सपोर्ट के जो सबसे बड़े रीजन है, फॉर एग्जांपल गुजरात है, महाराष्ट्र है, तमिलनाडु है, कर्नाटका है, आंध्रा है, उनके पास अब डबल करने की पॉसिबिलिटी कम है, मगर हमारे पास एक्सपोर्ट डबल करने की पॉसिबिलिटी इंडिया में सबसे ज़्यादा है। सर थैंक यू वेरी मच। सर आपके माध्यम से एक डेटा एनालिसिस मैं रखना चाहूँगा और इंफ्रास्ट्रक्चर में 2 आईसीडी प्रोजेक्ट रखना चाहूँगा, अगर आपके माध्यम से तैयार हो जाए तो हमारा पीओ की तरफ से। सर थैंक यू। धन्यवाद सुमित जी। आपने जो कैसे हम 66,000 करोड़ के एक्सपोर्ट्स जो आज है उसको हम 5 साल में कैसे डबल कर सकते हैं, you have shared the insight with us and I'd like to thank you for the same. Now if want to get into another our next theme, that which sectors get thirst and why. But before that we have Mr. Vineet Mathur, who is Chief Postmaster General of India Post. So sir, if I may request you to share your high level, high impact decision you think that what we can do, and if you can also share about some interesting initiative of your department with all of us. Over to you, sir. Mr. Shukla, distinguished speakers on the dais, all exporters, participants in this meeting, I'm indeed privileged to speak to this august forum. I bring before you the facilities which India Post is able to support and give in smaller towns and villages to potential exporters and MSMEs. I would like to share with you डाक निर्यात केंद्र की सुविधा जो है मध्य प्रदेश राज्य में हमारे 57 शहरों में, गांवों में ऑलरेडी चल रही है। इसके द्वारा लगभग पिछले 6 महीने में 4,000 से अधिक छोटे उद्यमियों ने अपने आर्टिकल्स को लगभग 70 देशों में एक्सपोर्ट किया है। मेरे पास लिस्ट है, पेरू, कोस्टा रिका जैसे छोटे छोटे देशों में डाक निर्यात केंद्र के माध्यम से हमारे उद्यमी या स्मॉल उद्योग जो हैं, गुना है, आपका शहडोल है, इन क्षेत्रों से अपना एक्सपोर्ट आइटम्स कर रहे हैं। सो मध्य प्रदेश में काफ़ी अधिक पोटेंशियल है और डाक निर्यात केंद्र एक सुविधा है जहाँ पे पोस्टल डिपार्टमेंट आपको कस्टम्स क्लियरेंस और कस्टम्स डॉक्यूमेंटेशन अन्य साथी सुविधा के साथ हैंड होल्डिंग करता है। आगे हमारा ये उद्देश्य रहेगा, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की ये विजन है, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, और उसको छोटे उद्यमियों को एक्सपोर्ट किया जाए। तो ई कॉमर्स के साइट्स के माध्यम से जो किसी को ऑर्डर्स मिलते हैं वो आप डाक निर्यात केंद्र के माध्यम से वो डॉक्यूमेंटेशन एंड सपोर्ट कर सकते हैं। वी हैव ऑल्सो गॉट एन इंटीग्रेटेड फैसिलिटी विद GST department where all GST refunds are now made available to small time exporters. They don't have to run from pillar to post, and those facilities are available. We also train people how to manage small e-commerce websites and get their products more visible internationally or domestically. So domestic parcel system है,
डोमेस्टिक इंटरनेशनल पार्सल सिस्टम है, उन सबको इंडिया पोस्ट काफ़ी अच्छे से सपोर्ट करता है। और आपकी जानकारी के लिए पिछले 3 माह में लगभग 4000 से अधिक आर्टिकल विभिन्न पोस्ट ऑफिस, छोटे ज़िलों के पोस्ट ऑफिस ने भेजे हैं। 4 करोड़ तक का उसमें से हमारे को रेवेन्यू मिला है और कई करोड़ रुपए का सामान उसके द्वारा एक्सपोर्टर्स ने भेजा है। सो हम आगे चल के MPIDC के साथ वर्कशॉप्स करने के इच्छुक हैं, हैंड होल्डिंग करने के, जिससे स्मॉलर एंटरप्रेन्योर्स आर आल्सो एबल टू सेंड देयर प्रोड्यूस either domestically to bigger cities to connect to the markets, and internationally if possible through our office of exchange. And all custom queries are also handled online, so they don't need to have people in Bombay, Mumbai or Delhi to support or facilitate their parcels to move through international borders. This is one. The second thing which I want to pitch before this August forum is about international inward remittances. डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के साथ एक उसका सब्सिडरी बैंक है, इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक, जिनमें अगर आप, और वहाँ हमारा इंटरनेशनल टाई अप है विद रिया मनी, तो जो छोटे उद्यमी हैं यदि उनको फॉरेन एक्सचेंज के अकाउंट्स SBI या बड़े बैंकों में राज्य के बड़े शहरों में नहीं खोलना है, तो डायरेक्ट इनवर्ड रेमिटेंस फॉरेन एक्सचेंज की इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक और पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक के माध्यम से उनके खातों में पहुंच सकती है, which is a great service and a lot of people are already availing it, and 200 or more countries are connected for inward remittances there. So these are the things. Then we also do a lot of logistic and movement services. We have road network transport systems. We have connections with railways. And most of the airlines and flights are managed through the India Post systems. If you want to use speed, then Speed Post is internationally available. 35 kg parcels can be sent, and those facilities are available. So we are wanting to support most of the smaller entrepreneurs, smaller people who would wish to be supported, and there is a documentation to be done. So seamless export support is given by India Post. So this is all I had to say. Thank you very much. Thank you, Mr. Mathur. Your points are well noted. Both areas of collaboration. Under the leadership of our Export Commissioner, we have set up at the district level Trade and Investment Facilitation Center as well. And we would like to collaborate with your district Dak Niryat Kendra to organize the workshop together, and some sort of a high level collaboration possibility between MPIDC and India Post we may explore post this session. And I'm sure that we have some association heads here, and they would also have taken a note of that Dak Niryat Kendra and remittance services. We need to put this word out as well at the district level, especially for that smaller companies and for ODOP companies, one district, one product companies as well. So with that, would like to get into another next theme. We have the Director General of Pharmaxil with us. We have the Association Head of Textile as well. Would like to hear your thought. Over to you. We have with us Mr. K. Rajabhanu, who is the Director General Pharmaxil. How do you see that the growth of pharma products from Madhya Pradesh, and what intervention you would like to propose? Thank you, Mr. Ravi. Thank you, MD, MPIDC, and of course, FEO. In fact, as I already mentioned in my on the morning talk and all, right now, as a country, we are at about exporting at about 30.46 and still going on. And basically, our products are generics and catering to the needs of around 200 destinations. But I think the country is now taking a different leap in terms of the next generation molecules, in terms of biosimilars, biologicals, biopharmaceuticals, and of course complex generics and other things and all. And certainly, as I mentioned earlier also, that my career in drug administration for 30 years, I have seen the different parts of the country, and Madhya Pradesh is one such
state, which is having a very good infrastructure in terms of the capabilities, technical know-how, the skill sets and everything. And this is the time to grab this opportunity in terms of taking up the molecules, and all those companies which are there already, which are there, and they are doing it so. And for their exports and all, if anything which can be facilitated them in terms of, I think we all know that the pain points with respect to their registrations and all at the various overseas and all, which we are always try to look through our line ministry. But as such, at this place in your state itself, if they have a specific points and all, and specific pain points and specific things and all, which can be taken up, and if they have a very I don't know whether the particular CZs are, you have a life sciences clusters and also such things. These will definitely help them in taking their manufacturing these products and have a collaborations like what we have already requested the ASEAN countries if they have to invest and all. And of course that will be really helping, because these products requires a solid technical backup and also the investment. I think these are very important things for that. So if these are things can be looked into, can be deep dive into that one, I think definitely the exports from this part of the country will grow. Because our ambitious goal for the 2030 is around, for the entire sector is 120, 130, but exports is around 60 billion USD. And of course, by 2047, it definitely goes beyond that. So, I mean, I try to give you some of the statistics. I try to give the kind of products which the world is looking for in terms of biosimilars, in terms of oncology, in terms of complex generics, in terms of other personalized medicines. And if the industry, if we can bring together and sit with them and look for their ask, their wish list and all, and what the kind of technology, technical requirements and all, I think that will really help them. That is what my take. Thank you. Thank you, Mr. K. Raja. One request from our side that that the presence of Pharmaxil in this state and the activities, we have some other export promotion councils. They already have presence in Bhopal and Indore. We have the presence of FIO as well. We would be very happy to support in any manner to facilitate. But if we can do more activities in Madhya Pradesh, certainly, you can count on me. Thank you. Great. So we also have Mr. Raman Datta, who heads Brands and Sourcing Leaders Association. It's a textile association, and lately Madhya Pradesh has attracted large investment into textile industry. So I would like to invite Mr. Raman Datta to share his thoughts about how we can increase textile exports from Madhya Pradesh. Thank you, Mr. Tiwari. I would like to start with certain different perspective. Sir, हमने कहा कि हमारे पास export का data नहीं है. So data is a very important thing to start any business. तो पहले market research कि किस product की demand सबसे ज़्यादा कहाँ है. अगर वो demand let's say जापान में है, तो वो किस price पे buy कर रहे हैं. दूसरा data. तीसरा data कि किस country में best technology available है to process और automate to make that productions. ये तीसरा डाटा. अगर ये तीन डाटा हैं तो कोई भी मैन्युफैक्चरर, हम सबको मालूम है कि इंडिया इज द मोस्ट फेवर्ड कंट्री, मोस्ट बेस्ट कंट्री टू डू मैन्युफैक्चरिंग. हम पूरी दुनिया से सस्ते हैं, हम चाइना से सस्ते हैं, ये हम बोलते हैं, लेकिन हम अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दिखाते हैं एक एंटरप्रेन्योर को कि दिस इज 3 countries अवेलेबल, इस प्राइस पे वो खरीद रही है. हमारी मैन्युफैक्चरिंग एक्सीलेंस, हमारी इंडिया, हमारा मध्य प्रदेश जो पॉलिसीज़ देता है, ना वो बांग्लादेश देता है, ना वो बहुत सारी कंट्रीज देती हैं, बट दे आर स्टिल बेटर देन अस इज मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपोर्टिंग. बट व्हाई? बिकॉज उन्होंने डाटा के ऊपर बहुत काम किया है. दे हैव अ फोकस मार्केटिंग. दे आर नॉट गोइंग टू कंट्रीज जहाँ से बिजनेस आना नहीं है. जहाँ से आना है, कौन सी कंपनीज कितना बाय कर रही हैं, ये सब अवेलेबल है. नाउ दिस इज one of the suggestions I give. I am also ready to give a solution. हमारी एसोसिएशन is Brands and Sourcing Leaders Association. हमारे 12 international chapters हैं. We have a US chapter, we have a Europe chapter, we have a Japan chapter.
जहाँ पे brands और sourcing companies के heads हमारे members हैं, they have a huge connect of vendors in their respective countries. तो अगर मुझे आज बोला गया कि we have a fruit product which can be done from मध्य प्रदेश, तो मैं तब से सोच रहा हूँ कि कौन सी country ऐसी है जिसके अंदर मैं इनको promote कर सकता हूँ. So first thing what I did, I WhatsApped in my international chapter group, can we source oranges from India? And if they are sourced from any other country, what are the prices? Can you give me some data? So before I meet the gentleman, I should have the data. Listen, this country is available at this price. और ये सरकार सबसे अच्छा कर सकती है अगर हम डाटा पे काम करें. We are ready to partner, we are ready to support. Second is collaborations with those countries. और उसमें सरकार ने सिर्फ facilitate करना है वहाँ की इंडस्ट्री और यहाँ की इंडस्ट्री की. The way I spoke to the Vietnam High Commissioner, he said we are ready to get you collaborated with the VITAS with MPIDC. और हम MMF को यहाँ पर, क्योंकि वो बहुत अच्छा बना रहे हैं, हमारा पॉलिएस्टर नेट्स का बिजनेस प्रैक्टिकली 10 साल में वियतनाम शिफ्ट हो चुका है. और they are expensive. It's not a cheap country. They have a best product development center in Sri Lanka, invested by Sri Lankan government. और वहाँ पर invested by Sri Lankan government, by VITAS himself. उन्होंने पैसा खुद लगाया 100%. और हमारी सरकार तो सब्सिडी दे रही है डेवलपमेंट सेंटर लगाने के बाद भी, फिर भी हमारे यहाँ नहीं लगा. तो I think these are some of the points we really need to work hard, and the world is changing very fast in this geopolitical solution. और आज टेक्सटाइल के अंदर we need to have solutions in the current tariff situation which can impact the industry. Thank you. Thank you, Ramanji. So, Ramanji, you talked about this trade information gaps as well, which was part of one of our themes, that how we can what sort of info gaps and what sort of the cost of it, and how, since we have a lot of export promotion councils, we have MPITC also as a mandate to promote export. So would like to hear the thoughts from entrepreneurs. We have Mr. Mihir Merchant in the room, and I would like to invite him to share his thoughts, in his journey about export promotion, that knowledge gap, and what sort of a role, what we can sort of, institution can play. So, Mihirji, if I may invite you to share your thoughts. Thanks, Ravi. So I did. It is good. Whatever deliberations that have been going on. So all I could say is, we are again typically a small to medium scale industry, and when we set out to look at exports as a possibility, one of the most important things that came was, because I come from an engineering sector, there was adherence to the standards. So what becomes very important for exporters, and Bhopal definitely has a very good opportunity, because we have a whole range of engineering industries here who are catering to very, I would say, complex requirements of different industries across the country. But what becomes very important is for people to know is that fine, you can try and export, but you also need to take care of a lot of things when you are starting the export business, especially when it comes to logistics, be it when it comes to how you are packing, adherence to quality, all those factors. So my take to most of the exporters would be that, when you are trying to enter a market, first thing is that you need to get to the market. You need to understand what are the demands, local demands, identify, potential customers. And all this is possible. We've been working with a lot of associations, and of course CIA is there, and plus many others. So where, one thing that has always helped is being in part of, all these new schemes that are coming in for export promotion. They are going to be quite handy. People should try and take advantage of it. There are a lot of other incentives that people do get by exporting. When they can actually take advantage of capital goods schemes and many others which can help them to improve their own manufacturing setup. But at the same time,
like I said, when you are entering, you need to understand the market, you need to understand what the demands of the particular region are, and emphasis on quality becomes paramount. So that is, I mean, because, one little thing that you may, where you, if you go wrong, it could, not only hamper a chance for your own company, but for the entire sector itself, for the country itself. So I would say that anybody who is getting into it, I mean, you need to really take care of some of these factors when you are looking at starting on export business. So, and let it be like a step by step. First thing would be identify which regions, where are, maybe that's best possible by going into trade shows, by maybe, going to trade shows in those countries, identifying your customers, and have patience. I mean, it is something that doesn't happen overnight. It would happen gradually. Yeah, thanks. So Thank I think you, that would Meherji. be from my side. Yeah. Oh, great. Thanks for your input, Meherji. And I would request I'll be opening the forum as well in some time to receive the input from, from all of you. And would request that you may please feel free to be direct. Our export commissioner here, he appreciate honesty and he does not need courtesy. And if something is broken, say it. And if something doesn't work, You're talking about me. yes, boss. Goodness. So feel free to, that something doesn't work, do share that with us. So now we have with us Mr. Jabal Naduwat. He is the representative of Observers Research Foundation. It's one of the, the well-known policy think tank in India. So I would like to invite Jabal for your, remarks and, if you'd like to share with us. Thank you and good afternoon. I represent the Observer Research Foundation, which is one of the world's biggest policy research think tanks. I think the big question we need to ask ourselves is, how do we reimagine our strategy? How do we stop thinking incrementally, but rather think exponentially? And that's the big question that we need to look at. I think we already referred to lack of knowledge. We have the India-UAE SEPA, for example. We have a number of FTAs. We are working on India-Mercosur agreement, and we're now looking at customized arrangement with Mercosur nations, enormous trade possibilities. But how many of our MSME partners really know about this? I think that's the big question. If we can somehow figure a way to educate our MSME partners, there can be a incremental of up to 30 to 40%. The second, in terms of exports, so knowledge is one very important thing. The second is we need to create a dynamic response cell, not just in just about every state. Now, the global geopolitical landscape is in a state of tremendous flux. I mean, we were looking at the INSTC in a big way, and now suddenly we have the Trump route which has come up. So these things, these changes upend established ideas, protocols, plans. Are we responsive enough? The Trump 50% tariff, how have we supported our exporters? So if we can create a dynamic cell that stands on its feet and thinks in real terms and adjust strategy in real terms, that's going to bring us tremendous amount of exponential gains rather than incremental. The other question which is that over the last decade and a half, we've seen tremendous improvement in the ease of doing business. I think more than ease of doing business, now we need to focus on the cost of doing business. How can we bring down the cost of doing business? So we have ICTs here and wonderful stuff the state is doing. But how can we perhaps reduce the transit times? Are there transit lags? Because the exporter gets paid after the product reaches the customer. So if it's 30 days, then it's 30 days plus 45 days. But if it's 2 months, it's 2 months plus 45 days. We need to think about it. Credit rating becomes access to credit becomes a huge challenge for a lot of MSMEs. So
can we think of some sort of credit rating mechanism for MSMEs that's really workable? Something we need to think about. Now, beyond all this, beyond the manifest and beyond what we normally do, we need to understand the economics of decisioning. The economics of decisioning is somebody goes on Google, somewhere sitting in Armenia, or somebody sitting in Tanzania, or somebody sitting in Serbia or wherever to look at exports. They're looking at Google. They're looking at what comes in the first 2 pages. Are we visible enough? Are our strategies visible enough? Are our thinking visible enough? Is our capacity and capability visible enough? We need to think of how do we create that visibility. But beyond all this, I mean, if you look at around 1995 onwards, if you look at economic studies, they talk about a direct correlation between trust, warmth, and economic outcomes. And I think in India, the 2 states that really score high on warmth and friendliness is perhaps Madhya Pradesh and Rajasthan. So how can we create a brand Madhya Pradesh that really brings out the essence of the state and therefore the kind of trust that can be built in businesses here? And so our approach therefore has not just to be about business, but our approach has to cascade behavior, sociology, economics, and all of it. So it has to be multidisciplinary in how we approach this. The last point I really want to make is what I'm observing in Africa, for example. In Africa, Europe has come in a big way, positioning Global Gateway as the alternative to Belt and Road. But none of that, I mean, if you look at their signature Lobito corridor, none of that is really translating because the mines are Chinese, the trains are Chinese, the contracts are going to the Chinese, and the materials, for example, on Lobito is getting exported to China. The point is, how can we create differentiated propositions? China comes in there, state-backed money. We may not have the money, or the strategic risk cannot be undertaken by the state. But also we need to understand that where we export, it's also a national responsibility that we are fulfilling. It's also a strategic play that's there. So there are multiple options today in terms of blended options, partnering with international finance organizations and others. Massive infrastructure projects are up for the grabs in Europe. European electricity grid is undergoing a complete revamp. Huge opportunity. There are EPC companies in the state that can bring in money into the state. So we need to think about these 5 or 6 aspects. So that I'll just close there, which I wanted to just put from my perspective. Thank you. Thank you so much, Javelji. I'm sure the team may have taken the note of it. And we would get back to you regarding your ideas that how we can implement it in the state of Madhya Pradesh. Now, we have a representative from the district administration as well. So if I may request Ms. Nanda, who is CEO Jilla Panchayat, you guys may have heard about district as export hub initiative and one district, one product implementation, which is required, and the heavy lifting is required by the district administration. We'd like to hear your experience, ma'am. Thank you so much, sir, for this opportunity of being heard. I'm the only person representing a district, and so I come from Agar Malwa. It's a very small district, young. The district was formed in 2013 out of Shajapur. And so we are looking at business opportunities. It's a very new place, like business parks, and these opportunities are very huge there. And MPIDC is coming up with several projects. So we have around 82 hectares of land where MPIDC is developing, and we are still looking at land where new projects can come up. We have McCain's is coming with a major project there, and with an investment of around 4,000 crores. And as I'm here to talk about the ODOP initiative, orange is our crop, as we had a discussion with Mr. Raman. So we are only producing the crop, and the farmers have no
whereabouts की कहाँ पे हमको crop बेचना है, and there are buyers coming from Mumbai and other places who are just purchasing the produce and they are whatever they are doing it, but we are not aware that what happens with our oranges. So we have a big opportunity of food processing coming into picture, and we are looking at industries if someone is willing to partner there in the district. And MPIDC, as we have been listening the entire day, that there are several subsidies being offered to the upcoming industries if anyone is interested there. And this was like very sudden, I was not prepared. So I would just conclude with the this thing, that Agamalwa, it is an upcoming hub for renewable energy as well. We are coming up with projects of solar as well as wind. So that the energy sector we are rich in. We have proper water facilities there, and McCain's coming in there. It ensures that all the facilities are in place, and so it is like a blue ocean opportunity for anyone who is willing to come up there. And I would be open to talk after this interaction if anyone is willing to. Thank you so much. Thank you, ma'am. Sir, we have 15 minutes left. We have the representative of infrastructure and logistics. We have the representative of Concord. We have some banks. We want to include the initiatives and challenges related to finance, logistics, infrastructure, and we also have some industrialists. So in 15 minutes. We will try to cover that. Is there anything you would like us, or we can continue like to? No, I think we can discuss during when we are discussing infrastructure. But one of the things from the policy which is missing is that our export promotion policy very clearly speaks about dedicated export parks. And I'm sure if you look at the kind of incentives which the government of Madhya Pradesh is promising, or which is a part of the policy, is that 50% or up to 20 lakhs rupees per acre will be given back in 2 installments and maximum up to 40 crores. So if any of you are interested in making your own dedicated export park, just for the purpose of infrastructure development, Government of Madhya Pradesh is ready to pay you up to 40 crores. If within that park, if you're trying to create a common facility center, you get another 25 crores. That comes with 65 crore now. And for the industries which are coming within that park, if you create JLD for them, you get another 10 crores. If you buy land, you get the stamp duty free. So just imagine developing, say, a dedicated export park of around 50 odd acres. Government of Madhya Pradesh is paying you at around 80 to 85 crores just in 2 installments. All the industries which are coming in that park get all other incentives which are given to any industry anywhere in Madhya Pradesh, whether it is done by MPIDC or by anybody else. Over and above, to do this, you can ask land from the government. Government is also ready to give you land if you intend to make your dedicated export park. I'm sure there are consuls, there are entrepreneurs, there are people into logistic infrastructure or export infrastructure. I'm sure there is no such policy anywhere in the country. So this need to be really, and over and above this, look at hack of it. We pay you at the cost of
schedule of rates, which is government of Madhya Pradesh rates or PWD rates. And generally, when you go for the bidding, you are bidded nearly 22-25% below the SOR rates. So there is a hidden advantage of around 20 to 20%, even what is being given to you. So it looks like a huge opportunity. Either we have not been able to promote it right at the right forum, but if you're not interested, must go and tell your friends there is opportunity. But this is real opportunity when I go through the policy, other than the smaller incentives which the policy give. So any of the units which comes within this park, they get the incentive of the industrial policy, of the logistic policy, as well as of the export promotion policy. Probably this should also be taken into account while you are looking for some newer opportunity other than your expansion or diversification of your existing industry. Now, you can continue. Sure, sir. Thank you. So I would like to, since we are talking about that infrastructure and logistics, may I invite the area director of Concor to share your thoughts. Since we are being the landlocked state, you have seen our leadership has taken the initiative and incorporated such ideas for our export promotion policy. I would like to hear your thought. How is your, the operation in Madhya Pradesh? What's the plan? Anything you would like to share with the state government and how we can collaborate with you guys? Namaskar and thank you very much, Mr. Tiwari. I am Ravi Chaturvedi, Executive Director of Container Corporation of India, looking after the logistics business. Container Corporation of India, which is known as CONCOR, is basically a PSU of Bharat Sarkar, a Navratna PSU. And we have 66 terminals spread over India, including 3 terminals in Madhya Pradesh. One is situated in Mandideep, other at Tihi in Indore, and third one is in Malanpur in Gwalior district. So, keeping in view of the guidance of the dreams of our Honorable Prime Minister, that for keeping the logistics prices low, logistics is nearly 7.8% of the entire cost which the shipper has to bear. That cost has to be brought down. In that backdrop, Concor has started its business since 1988, and our major focus is on EXIM business. Nearly 66% of our entire business is related to EXIM business. The quantum of our business at Mandideep, I can say that on an average, we are doing more than 1,200 containers in terms of 20 equivalent units to different ports of the world. And our gateway port from Mandideep is JNPT Nhava Sheva. We are connected to all the ports of India. We are doing our business double stacked operation from northern Indian hinterland to Mundra, Pipavav, Kandla port, and from the central Indian part, from Tihi, Malanpur, and from Mandideep, we are mostly running our trains to JNPT. Since we are rail-based container services, we are container train operators, but we are not only strictly limited to train operations. We are, in a true sense, we are a multimodal kind of logistics operator. We have a MOU with a Middle East-based company in which we are sending our export containers directly from our ICDs to abroad. To start with, we have recently sent nearly 200 containers to Middle East, to Jebel Ali and other ports of Middle East. And we are in discussion with our Singapore-based collaborators to do the business with Far East. And we will
also spread over to UK and Europe and US as well. Though there are few challenges involved in that, nevertheless we are on that particular path. So at Indore, Mandideep and Malanpur combined together, we are running almost 5 trains a day from this Madhya Pradesh so-called uh, landlocked but not fully locked from the gateway ports. It is very much connected, and it is as good as being on any coastal region. So there is no dearth of connectivity as far as the ports are concerned, and as far as services of Concord is concerned, for smaller units, for smaller containers. Since we run a train of 90 containers at one point of time, but for time sensitive and for speedy cargo, we have also our first mile and last mile kind of services involved. And we also send the containers directly to gateway port by our trailer services. And to encourage green logistics, we have acquired 200 LNG trailers at the moment. We are already having it, and we are running it at the terminals of few terminals of Gujarat and Maharashtra, Tamil Nadu as well. And we are very much open to deploy them at our Madhya Pradesh terminals. So for time sensitive, and at the same time, as far as the transit time is concerned, it is lesser as compared to road. And as far as the price is concerned, I can say that it is almost half of the road freight which we give to the transporters. So we are also ready to lend our services in educating the potential exporters or the importers, I won't say, but definitely sometimes import also gets reconverted into export. So we are also ready to hold the hand and extend our services, and we are ready to cooperate with MPIDC. We are also expanding our services at all these 3 terminals. Thank you very much. Thank you, Raviji. Our Principal Secretary earlier made an observation that a lot of exports being reported outside of Madhya Pradesh. Maybe we can discuss that offline and how Concor can help us. That we can have that conversation offline with you. Raviji, we have, sir, we have some top industrialists. We have. So just I wanted to add something which Mr. Ravi was telling. So as I was discussing earlier about the export promotion policy, there are similar things in the logistic policy which we as a state is seeing that's not being utilized by the industry. Say, for example, our policy talks about ICDs, private terminals, freight terminals, as well as Gati Shakti freight terminals. Naam bhale, it looks Gati Shakti terminal, but it's nothing. Recently, I found out that Madhya Pradesh has more than 16 Gati Shakti terminals. In our policy, we give you up to 50 crore as incentive to develop a Gati Shakti terminal. Nobody has came to government to claim for those subsidies, where on the other side, these terminals are being made. So that's a policy of the railway department, where the railways promote private sector industry to develop terminals along the railway lines. And if you are taking the benefits of railway, it doesn't stop you to take the benefit of the state of Madhya Pradesh. Because this was not there before 2025, probably industry do not know that these benefits are already available within the Madhya Pradesh also. Similarly, if you are, as a Concor, if you are developing new ICDs, earlier we were not having policy, but today you can ask land from us and ask 30% of your capital assistance, what you have invested in developing the ICD. So now these are the policy supports which are available
And this was done in a very holistic manner when everybody used to tell us that Madhya Pradesh has the disadvantage of not being a port state. So we thought to bring in the logistic policy as well as the export policy together at the same time so that you can create the logistics within the land and take that benefit of export policy to take it to the ports. Sure. Thank you, sir. So we have in a folder, we have kept the export policy, and we would share the soft copy of logistics policy with all of you, what sir just mentioned. So can we extend it by 10 minutes, because we have some IT companies as well. We have a representative of, first and foremost, I wanted to know if, of course, or we can conclude. I'm to be, I'm sure some of you will have to catch your flights. So try to be as quick, finish as quickly as you can. Sure. So maybe a quick observation from some industrialists we have with us in the room today, Mr. Manoj Modi. If quick a minute observation from your side. सर थैंक यू सर. सबसे पहले मैं सर आज धन्यवाद देना चाहता हूँ. आज बहुत अच्छा एक प्रोग्राम हम लोगों ने ऑर्गेनाइज किया है और हमारे अंदर एक नई ऊर्जा जागृत हुई है एक्सपोर्ट करने के लिए. मैं सर एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ यहाँ पर. वो बात ये है कि जब सबका साथ सबका प्रयास होता है, एक विश्वास भी हमारे अंदर जो है वो डेवलप होना बहुत ज़रूरी है. और विश्वास ये कि क्या वाकई अगर लैंडलॉक स्टेट से हम अगर पोर्ट तक अपना मटेरियल वो पोर्ट शिफ्ट कर रहे हैं तो 50% हमको सब्सिडी मिलेगी. और उससे दूसरी बड़ी बात ये है कि जब हम सब्सिडी लेने जाते हैं तो इट इज़ नॉट लाइक दैट कि हम किसी किराना शॉप पे गए और वहाँ पे हमने कहा कि हमको एक चाय का पैकेट दे दो और मिल गया. इट्स अ प्रोसेस बेसिकली. तो प्रोसेस सिंप्लीफिकेशन, मैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि प्रोसेस सिंप्लीफिकेशन के साथ साथ एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हमारे एसएसआई सेक्टर्स, एमएसएमई सेक्टर्स को होना चाहिए कि वो बहुत सिंप्लीफिकेशन के साथ चीज़ों को प्राप्त कर सकें. और इसके लिए एक सजेशन ये भी हो सकता है कि हम छोटे छोटे पॉकेट, जैसे किसानों का एक छोटा सा ग्रुप होता है जो सब मिलके अपनी बात रखते हैं और वहाँ से अपना काम आगे बढ़ाते हैं, वैसे ही छोटे छोटे इंडस्ट्रियलिस्ट इस बात को मिलके क्या कर सकते हैं. क्योंकि हम इंडिविजुअल लेवल पे तो बहुत काम करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कलेक्टिवली हमारा काम आगे नहीं बढ़ पा रहा है. वो कलेक्टिवली अगर हम साथ में काम करें, एक दूसरे पे विश्वास करें और उस विश्वास को गवर्नमेंट के साथ आगे बढ़ाएं. गवर्नमेंट इज सो प्रोएक्टिव. इतनी प्रोएक्टिव गवर्नमेंट मेरे को नहीं लगता किसी भी स्टेट की होगी जितनी प्रोएक्टिव गवर्नमेंट हमारी स्टेट की है. बट हमारा कहीं ना कहीं कन्वर्सेशन में, कहीं ना कहीं हमारी इस बात को लेके जो हम बात कह रहे हैं उसको कहना चाहिए कंप्लीट करने में जो मिसिंग कुछ टाइम है. बस वो जो अवेयरनेस की प्रॉब्लम है, अवेयरनेस के साथ सिंप्लीफिकेशन की बात है. और दूसरा एक कलेक्टिवली एक मोटो कि हमें एक्सपोर्ट करना है. एक्सपोर्ट 66,000 करोड़ का एक्सपोर्ट अगर जो लोग कर रहे हैं वो अगर और भी ग्रो करेंगे तो 10 से 20% और आगे बढ़ सकते हैं. लेकिन हमें नए लोगों को जोड़ना पड़ेगा सो दैट हम 1 लाख करोड़ से ऊपर जा सकें. तो हमारा सोचना ये कि हम उन सबको भी आइडेंटिफाई करें, उनको एक कॉन्फिडेंस बिल्ड करें और उनके साथ हम आगे बढ़ें कि जिससे कि हमारा ये एक्सपोर्ट है सरकार के साथ, सरकार के जो पॉलिसीज़ हैं उनको पढ़ना, उनके साथ बहुत सिंप्लीफाई करना, उनको आइडेंटिफाई करना, आगे बढ़े तो बहुत होगा. थैंक यू सर. Thank you. I'm Dr. Tripti Singh. Yeah. I would like to add a point to it. And since this is a forum where I can put in this kind of thing, I have been dealing with farmers and agri-produce for past 28 years now. And in the process, I found out that there are many export promotion policies, there is logistic policy and everything, but there are small facilities which need to be created at the district level and at the state level. Say for example, if we are dealing with agri-commodities, we need phytosanitary certifications. We don't have proper labs over here. We need, if we are dealing with some eatables, we need to have nutritional analysis labs. There is a great deficiency of these labs over here. If we are dealing with medicinal plants, we cannot have a certificate of analysis in Madhya Pradesh. We have to send the samples either to Bombay, Delhi, Indore, or somewhere outside in the south. So we are not getting all those facilities what we require here. I deal with farmers.
I have around 1200 to 2000 farmers associated with me, and we are facing this problem time and again. So I have been putting it at many places, maybe logistic firms अगर हम बात कर रहे हैं, Concord की भी आप बात कर रहे हैं, आप dry ports की बात कर रहे हैं, but we also need reefer containers, we need cold storages. Because this is an agri-commodity based state, whatever we are doing in the field of food processing and pharmaceuticals. Secondly, जो डेटा की बात करी गई थी, तो डेटा भी हमारे पास में बहुत ज़्यादा lacking है. If we are talking about the things which are being produced here and what we want to export outside Madhya Pradesh to any of the countries, we don't have standards. We don't have quality parameters. जो हमको जानने चाहिए या हम अपने किसानों को भी ट्रेन कर सकें कि these type of quality standards are required and we need to produce the material on these lines. So these are the things which are completely lacking over here. There may be incentives, there may be subsidies, whatever, but छोटी facilities जो एक agri commodity based state के लिए चाहिए, that is lacking, and we need to put a stress on infrastructure development on these lines. That is all I wanted to add. Thank you. Thank you, Tripti ji. Sir, एक दो observation और ले लें, then we can. हमारे बीच में कुणाल जियानी जी भी हैं, MD Servaform. Kunal ji would like to. Sure. Hello. Thank you. Sir, as manufacturer exporters, we export from our units at Hosur and at Silvassa. The export freight assistance is a very welcome initiative by the state government. My only suggestion is we need to increase the quantum from 40 lakhs or that 2 crores. I'll give you a very simple example. If we export, the price that we need to incur on a container, a 40 feet high cube container that we would export from our unit at Silvassa versus doing that from Madhya Pradesh is a cost of about, a differential cost of about 30 to 35,000 per container. If I were to sum it up, जो 40 लाख की हम assistance दे रहे हैं, that is good for about 150 containers comparatively, annually, which is a very small number. So because ideally, if you were to look at exporters, they would be exporting this figure in a month and they would exhaust their limits. So while this is a very welcome initiative and it has been pending for a long time, we would request to have a relook at the quantum of this particular subsidy. The other is Concord is doing a fantastic job with their ICDs, as Chaturvedi ji mentioned. And the other is that we need to have better labs at the plastic parks. So I come from a plastic industry. There's a developed plastic park that we have at Tamot. But the labs, the SIPIT labs there needs to be functional to a manner where the reports can be taken by the custom authorities while exporting. So these were my 2 suggestions, and we welcome the changes and the suggestions in the export policy. Thank you. Thank you so much. हम लोगों ने मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट्स की बात की. जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी टारगेट है, सर्विस एक्सपोर्ट का 1 ट्रिलियन का टारगेट है, and we have a representative of electronics and software export promotion council. हालांकि उसका one of the challenges या number 1 challenge सर्विस एक्सपोर्ट्स को हम लोग अभी तक कैसे उसके स्टैटिस्टिक्स को वो करें. जो हम 66,000 करोड़ एक्सपोर्ट्स की बात करते हैं वो मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट है. So I would invite the remarks from Electronics and Software Export Promotion Council के representative से वो IT sector के behalf में अगर आप अपने points को share करना चाहें. Or anyone else from हेलो सर, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं. हमारे जो एशियान देशों के जो सदस्य आए हुए हैं, मैं उनका आभारी हूं, हमारे अधिकारियों का आभारी हूं. सर, मैं बैतूल जिले से रहता हूं.
जो कि मेरा जिला ट्राइबल जिला आता है, मैंने अपनी 24 एकड़ भूमि पर बहुत बड़ा प्लांटेशन करके, एक हल्की भूमि पर करके मैंने एक हॉर्टिकल्चर को बताया। इसी प्रकार मैंने कोल्ड स्टोर का निर्माण किया सर। नेशनल हाईवे पे है ये, बैतूल से 14 किलोमीटर पहले है। मेरे पास खुद की ज़मीन है सर। मैं उस पर एग्रो इंडस्ट्री डालना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा जिला ट्राइबल जिला है। मैं जहाँ इंडस्ट्री डाल रहा हूँ वो स्पेशल ट्राइबल ब्लॉक है। मैं हमारे अधिकारी महोदय से, जो उन्होंने सबने बोला, मैं उनसे निवेदन कर रहा हूँ, चंद्रमौली शुक्ला साहब से और हमारे अन्य अधिकारियों से, कि मैं चाहता हूँ कि हम वीट का ब्रेड मेकिंग फ्लोर की फैक्ट्री डालें। उसके बाद हम मक्का की फैक्ट्री डालें सर, क्योंकि मक्का के कई बाई प्रोडक्ट, 15 बाई प्रोडक्ट होते हैं जो हमारे यहाँ से विदेशों में जा सकते हैं सर। उसके बाद में हमारे यहाँ चावल की बहुत बड़ी पैदावार होती है। इसी प्रकार गेहूं की भी होती है, इसी प्रकार मक्का की भी होती है। चावल आज हम बड़े गर्व से कह रहे हैं कि आज हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और हमारे सीएम साहब पटेल साहब यादव जी के नेतृत्व में हम बहुत बड़ा एक्सपोर्ट कर रहे हैं। आज बहुत कम प्राइस है। अगर हमारे किसी साथी को अगर ये इंडस्ट्री के लिए मैं यहाँ डालना चाहता हूँ, अगर कोई ज्वाइंट वेंचर में आके डालना चाहता है तो भी मुझे स्वीकार है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। Thank you. So, sir, with that, I would like to invite you for your concluding remarks. Thank you. I think we had a great participation from various councils as well as from the industry in general. I'm not sure whether I'm supposed to answer the last 2-3 suggestions or the questions which I asked, but about the subsidies, I know just to give you certain numbers that in the year 24-25, Government of Madhya Pradesh, especially the industry department, large and smaller scale MSMEs, we distributed around 6,000 crores as subsidies, which has been paid. And so this is a continuous process. At the start of the financial year, on the 1st of April, we start getting claims from the industry, and by the end of the year, we try to pay them. I'm not saying it has been very smooth, but since last 2 years, it has really been quite smooth. You will not believe that in MSME department, they are looking for claims. They have money, but there are no claims to pay. So second is the kind of infrastructure which is required at the rural level. They really are required. We appreciate the kind of suggestions which we got, especially to support the agriculture and support the export which should happen from the district level. Idea was to make districts as an export hub. That probably this kind of deliberations will help us. Finally, one was about the size of the freight subsidy. The policy has been nearly 10 months now. We are still looking to spend even a single penny. We haven't got application which is where we have to pay some money as a freight subsidy. Let me spend some money. Then we realize that, okay, we really need to increase the size of it. Unfortunately, because we never had such kind of deliberations, of all the 10 kind of different subsidies under the export promotion, none has utilized anything. None means none. I haven't got a single claim under the export promotion policy to be paid off. So maybe it's just a new policy. We need a lot of dissemination to happen at the field level, not only at the Bhopal level, but we need to go down to the district at the district facilitation centers. And I think Ravi was discussing with the sir that we might have some kind of collaboration with the post offices or at the district level, that our export promotion cells at district level and your offices, how we can come together and make it more useful. So we are still transitioning. We have created policy. We really need to look into that how to best use that. And initially,
we had a lot of discussion that what should the size of the freight support to be given. There were two things. One, thought process was that it should be for promoting new exporters to come. So we thought that this size is good. Supporting the existing big exporters was not idea. So that's why when you calculate in terms of number of containers, the tonnage of the containers reaching to the port, it might look a little smaller, but the idea was to create new exporters in Madhya Pradesh. So last, I think with the export promotion cell and Ravi, your team and the team within MPIDC, I have not been told by anybody that there is a new exporter in Madhya Pradesh. Thank you. Thank you, sir. And thank you all for your directness and expertise. This morning we had 8 Asian ambassadors. They came here to explore partnership with Madhya Pradesh. And tomorrow if they would ask that whether Madhya Pradesh is ready to export, we can say yes, we are, the good deliberation today. And I would like to, on behalf of Government of Madhya Pradesh, like to express my sincere gratitude to all of you to travel all the way, joining us here and sparing time with you. This is just a beginning. We will continue our dialogue. And sir, if I may request you and all of you to come on the stage for the photograph. And thank you so much for all for your time. May I invite all of you to the stage for the photograph, please? Thank you.